పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. हिंद मेंबर मुंतखब आर्म्स चुर खुदावंद ताला सु नाव है ये कसम करान कि बस थाव भारत किस आइन पे युस कानून किन कायम सपदनु छु पूर्ण एतमाद बरोज आइन वफादार बथाव भारतीय सरदारी तो सालमियत बरकरार तो दिम सारी फर्ज ईमानदारी सान अंजाम इमे सुपरत थावन छ. थैंक यू. हमारा तो पुराना इंदौर के साथ श्री पी के कुन्हालीकुट्टी. I, P.K. Kunyarikutti, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संसद सदस्य रविवार 23 जुलाई 2017 को अपराह्न 5:30 बजे माननीय राष्ट्रपति से प्रणब मुखर्जी को विदाई देंगे. इस अवसर पर सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक हस्ताक्षर पुस्तिका सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति जी को भेंट की जाएगी. हस्ताक्षर पुस्तिका माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर के लिए केंद्रीय कक्ष में रखी गई है. यह 17 से 20 जुलाई को 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक प्रतिदिन संसद सदस्यों के हस्ताक्षरार्थ केंद्रीय कक्ष में रखी रहेगी. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे हस्ताक्षर पुस्तिका पर हस्ताक्षर करती जाएं. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे लोकसभा के साथी श्री विनोद खन्ना, राज्यसभा सदस्य श्री अनिल माधव दवे और 4 पूर्व लोकसभा सदस्य श्री सूबेदार प्रसाद सिंह, श्री अजीत कुमार साहा, श्री ईरा सिंह जिन और श्री नारायण सिंह चौधरी के दुखद निधन के बारे में सूचना देनी है. श्री विनोद खन्ना पंजाब के गुरदासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्तमान सदस्य थे. वे 12वीं से 14वीं लोकसभा के सदस्य भी थे. श्री विनोद खन्ना वर्ष 2002 से 2004 तक पर्यटन और संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री थे. श्री विनोद खन्ना जी
विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी थे। सुविख्यात एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी फिल्म अभिनेता श्री विनोद खन्ना वर्ष 1998 से 2002 तक फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे के अध्यक्ष भी थे। श्री खन्ना ने 120 से अधिक फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। मृदुभाषी, सजग जनप्रतिनिधि एवं कुशल अभिनेता के रूप में श्री विनोद खन्ना ने अपने प्रशंसकों के हृदय में अमिट छाप छोड़ी है। श्री विनोद खन्ना का निधन मुंबई में 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अनिल माधव दवे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के वर्तमान सदस्य थे। पूर्व में वे 2 कार्यकाल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री दवे कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक 2015 संबंधी राज्यसभा की प्रवर समिति के अध्यक्ष भी थे। वे अपने लंबे और प्रतिष्ठित संसदीय कार्यकाल के दौरान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। प्रबुद्ध चिंतक एवं पर्यावरण प्रेमी श्री दवे ने विभिन्न विषयों पर पुस्तकें भी लिखी है। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए उन्होंने जन जागृति के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किया। श्री अनिल माधव दवे का निधन दिल्ली में 18 मई 2017 को 60 वर्ष की आयु में हुआ। श्री सूबेदार प्रसाद सिंह उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे और उन्होंने वर्ष 1977 से 1980 तक उत्तर प्रदेश के ग्रामोद्योग मंत्रालय में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सूबेदार प्रसाद सिंह का निधन वाराणसी उत्तर प्रदेश में 21 सितंबर 2016 को 82 वर्ष की आयु में हुआ। श्री अजीत कुमार साहा पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए 5वीं से 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री साहा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, याचिका समिति, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते संबंधी संयुक्त समिति और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री शाह का निधन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 26 अप्रैल 2017 को 78 वर्ष की आयु में हुआ। श्री इरा सेजियन तमिलनाडु के पेरम्बलूर और कुंभाकोणम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అటు రాజ్యసభ సమావేశాలు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూద్దాం. For 2 consecutive terms from 2000 to April 2006 and from April 2006 to April 2012. He served as the Minister of State in the Ministry of Coal and Ministry of Mines in the Union Council of Ministers from May 2004 to April 2008. In the passing away of Dr. Dasari Narayana Rao, the country has lost a well-known film personality, a distinguished parliamentarian, and a dedicated social worker. Shri Era Sezian passed away on the 6th of June 2017 at the age of 94 years. Born in April 1923 in Thanjavur district of Tamil Nadu, Shri Sezian was educated at Annamalai University. Shri Sezian started his career as a journalist and was editor of Tamil dailies Nam Nadu, Manram and Makkal Arasu. He served as the president of South Zone Insurance Employees Federation and was a member of the National Integration Council and Indian Council of World Affairs. He has several books of short stories, one-act plays,
drama, and articles on political, economic, and social subjects to his credit. Shri Sajian started his legislative career as a member of the 3rd Lok Sabha in 1962. He was also a member of the 4th and 5th Lok Sabha. He served as chairman of the Public Accounts Committee from 1971 to 1973. Shri Era Sajian represented the state of Tamil Nadu in this house from April 1978 to April 1984. He also served as chairman of the Committee on Papers Laid on the Table from 1982 to 1984. In the passing away of Shri Era Sajian, the country has lost a noted journalist, a distinguished parliamentarian, and a political thinker. Shri Palwai Govardhan Reddy passed away on the 9th of June 2017 at the age of 79 years. Born in November 1936 at Mahbubnagar district of Telangana, Shri Reddy was educated at the Vivekavardhini College, Osmania University. An agriculturist and social worker, Shri Reddy worked assiduously for the welfare of the farmers. He was a member of the managing committee of the Andhra Pradesh Agricultural University. He served as the chairman of the Andhra Pradesh Forest Development Corporation Limited. He also served as director of various corporations. Shri Reddy started his legislative career as a member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and was a member of that assembly for 5 terms from 1967 to 1972, from 1972 to 1978, from 1978 to 1983, from 1983 to 1985, and again from 1999 to 2004. He was also a member of the Andhra Pradesh Legislative Council from 2007 to 2009. He served as Minister of State for Rural Water Supply, Youth Service and Leather Industries Development Corporation of Andhra Pradesh, Handlooms and Textiles, Sericulture and Printing and Stationery in the Government of Andhra Pradesh from 1981 to 1982. Shri Govardhan Reddy represented the state of Andhra Pradesh in this house from April 2012 to June 2014 and the state of Telangana from June 2014 till his sad demise. In the passing away of Shri Palwai Govardhan Reddy, the country has lost a distinguished parliamentarian and a dedicated social worker. Dr. C. Narayana Reddy passed away on the 12th of June 2017 at the age of 85 years. Born in July 1931 at Karimnagar district of Telangana, Dr. Reddy was educated at Chadarghat College and the Osmania University. He was awarded honorary doctorates by several universities. A poet, Dr. Reddy started his career as a professor of Telugu at the Osmania University. He served as chairman of the Andhra Pradesh Official Language Commission and the Andhra Pradesh State Cultural Council. He also served as the Vice Chancellor of the Andhra Pradesh Open University from 1986 to 1989 and of the Telugu University from 1989 to 1992. He was the advisor for culture and languages of the government of Andhra Pradesh from 1992 to 1995. పార్లమెంటు వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇటీవల మృతి చెందిన నేతలకు సభ నివాళులర్పించింది. లోక్సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. రాజ్యసభ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి.